Hello students, this is our ninth chapter, Control and Coordination. In the previous video, we have studied about neural tissues and we studied about neuron and nerve cells. We studied types of neurological cells and their functions, and then we have stopped it over there. In this part, we will study a very new concept for you all, that is synapse. Synapse is a junction between two nerve cells with a minute gap. So let's see student, what is synapse, where does it occur, what are the properties and everything related to synapse, the term. We will study everything in deep. So let's start. As I told you, synapse. It is a junction between two nerve cells with a minute gap. एक हल्का गैप है. It is a junction between two nerve cells with a minute gap, that is synaptic cleft in between them, which allows transmission of impulse by a neurotransmitter bridge. Because of this, it allows transmission of impulses. What are impulses? We have studied it in the previous video. So it allows transmission of impulse by a neurotransmitter bridge. Then moving forward, these are the properties of nerve fibers. We will study every property one by one. First is excitability और irritability. Excitability क्या है या irritability क्या है? The nerve fiber, on account of presence of a polarized membrane, have the ability to perceive stimulus and enter into a state of activity. एक ऐसा स्टेट जहाँ पे वो एक्टिव है, इट इज़ अ स्टेट ऑफ एक्टिविटी. वो नर्व फाइबर, ऑन अकाउंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ अ पोलराइज्ड मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन पोलराइज्ड है, मतलब एक डेफिनाइट पोजीशन पे है, वहाँ पे जो नर्व फाइबर्स है, दे विल हैव द एबिलिटी टू परसीव स्टिम्युलस. वो लोग स्टिम्युलस को अपने तरफ परसीव करेंगे एंड देन दे विल एंटर इनटू अ स्टेट ऑफ एक्टिविटी. सेकेंड प्रॉपर्टी है नर्व फाइबर्स की, वो है कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी के बारे में हम लोग पहले भी ये टर्म से थोड़े कंडक्टिविटी इज़ वेरी मच कॉमन. वी हैव studied about this term in previous chapters also. Conductivity means something to conduct. तो यहाँ पे it is the ability to transmit the excitation. जो एक्साइटेशन है, जो इम्पल्स जाने वाले हैं आगे, उस एक्साइटेशन की जो एबिलिटी है उसे ट्रांसमिट करना. इट इज़ द एबिलिटी to transmit the excitation. Third है stimulus. It is any detectable physical, chemical, electrical change in the external or internal environment. ये कोई भी डिटेक्टेबल, जहाँ पे हम डिटेक्ट कर लिए, या फिज़िकल या केमिकल या इलेक्ट्रिकल चेंज है in the external or internal environment, which brings about excitation in the nerve, muscle, organ and organisms. In order to be effective, the stimulus must have a minimum density called threshold stimulus. Subliminal, that is weak stimulus, will have no effect, while supraliminal, जैसे strong stimulus है,
will produce the same degree of impulse as the threshold stimulus. As I told you, स्टिमुलस दो टाइप के हैं, एक वीक स्टिमुलस है, एक स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस है, एंड दे विल हैव नो इफेक्ट and one will have a same degree of impulse as the threshold stimulus. And what is threshold stimulus? The stimulus must have a minimum intensity. This is about stimulus. Then fourth is summation effect. Summation means a single subliminal stimulus. Subliminal means weak stimulus will have no effect. We have studied this about earlier also in the stimulus part, ऊपर यही पढ़ा. But if many such weak stimulus are given in quick succession, एक क्विक सक्सेशन में एक क्विकली अगर बहुत ज़्यादा ये वीक इम्पल्सेस दिए, they may produce an impulse due to addition or summation of stimulus. This is true. So this is also a property of nerve fiber. Fifth is all or none law. The nerve will either conduct the impulse along its entire length or will not at all conduct the impulse, as in case of subliminal or weak stimulus. All or none law, या तो पूरा या तो कुछ नहीं. So it will either conduct the impulse along its entire length or will not at all conduct the impulse. Next is sixth है refractory period. Refractory period क्या है? It is the time interval about millisecond. मिलीसेकेंड का टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं. It is the time interval during which a nerve fails to respond to a second stimulus, however strong it is. It fails, nerve fails to respond to a second stimulus, however strong it is. This is refractory period. Seventh N is synaptic delay. The impulse requires about 0.3 to 0.5 milliseconds to cross a synapse. एक synapse क्रॉस करने के लिए एक इम्पल्स को 0.3 से लेके 0.5 मिलीसेकेंड का टाइम चाहिए. दिस टाइम इज़ रिक्वायर्ड फॉर रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर. ये टाइम रिक्वायर होता है, चाहिए होता है फॉर रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर फ्रॉम द एक्सॉन टर्मिनल एंड एक्साइटेशन in the dendrons of the next neuron. Synaptic fatigue. Synaptic fatigue क्या है? The transmission of nerve impulse across the synapse. पूरे synapse के टाइम पे जो ट्रांसमिशन हो रहा है नर्व इम्पल्स का, it halts temporarily due to exhaustion of its neurotransmitter. It halt temporarily, not for permanent, for temporary purpose it is halt due to exhaustion of its neurotransmitter. इसमें फर्स्ट है इसका velocity. The rate of transmission of impulse is higher in long and thick nerves. It is higher in homeotherms than in poikilotherms. The velocity of transmission is higher in voluntarily fibers, that is 100 to 120 meter per second in men,
as opposed to autonomic or involuntary nerves, that is 10 to 20 meter per second. Similarly, it is faster in modulated nerve as the impulse has to jump from one node of brain wire to the next. At the synapse where the neurons communicate with one another, the neuron carrying an impulse to the synapse is the presynaptic neuron. The neuron receiving input at the synapse is the postsynaptic neuron, or it can be called as generator region, that is gland or muscles. A synaptic cleft or a small intercellular spaces lies in between two cells having a width about 20 to 30 nm between them. The process by which the impulse from the presynaptic neuron, presynaptic means the neuron carrying an impulse to the synapse, is conducted to the postsynaptic neuron or cell, and it is called synaptic transmission. It is a one-way process carried out by neurotransmission. तो ये था all about velocity के बारे में हम लोग ने अभी पढ़ा. सो स्टूडेंट्स, ये सारा जो भी हम लोग ने पढ़ा, ये सारा था प्रॉपर्टी ऑफ अ नर्व फाइबर. नर्व का जो फाइबर्स है उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है उसके बारे में पढ़ा. तो पहला था हमारा एक्साइटेबिलिटी या इरिटेबिलिटी, सेकंड था कंडक्टिविटी, थर्ड वाज स्टिमुलस, फोर्थ वाज समेशन इफेक्ट, फिफ्थ वाज ऑल और नन लॉ, sixth was refractory period, and the last was synaptic delay, and the last is synaptic fatigue. तो ये सारी चीज़ें अगर क्वेश्चन आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यू नर्व फाइबर, तो ये सारा कुछ कॉन्सेप्ट उसमें लिखना पड़ता है. फिर हम लोग ने एक चीज़ पढ़ी अबाउट वेलोसिटी के बारे में. तो जो साइनेप्टिक फटिग है, हम लोग ने पढ़ा कि वो हॉल्ट होता है, उसका इम्पल्स जो है वो हॉल्ट होता है टेम्पररली ड्यू टू एग्जॉशन ऑफ इट्स न्यूरोट्रांसमीटर. तो उसमें वी हैव स्टडीड अबाउट वेलोसिटी बिकॉज द रेट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स इज़ हायर इन लॉन्ग एंड थिक नर्व्स. उसके हिसाब से कि वो जो रेट है इम्पल्स का वो कहाँ कहाँ इंक्रीज़ होता है, कहाँ पे ज़्यादा हो रहा है. तो हम लोग ने वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट अभी हम लोग ने पढ़ा उसमें वी हैव स्टडीड अबाउट दैट ओनली. फिर एक चीज़ हम लोग ने पढ़ी कि प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, एंड देन वी स्टडीड साइनेप्टिक ट्रांसमिशन के बारे में. तो इट इज़ अ वन वे प्रोसेस कैरिड आउट बाय न्यूरोट्रांसमिशन. तो ये सारी चीज़ें वी हैव स्टडीड अबाउट आर लास्ट वाली में साइनेप्टिक फटीग में. तो यहाँ पे हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ नर्व फाइबर्स कंप्लीट होता है. देन मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट जो कि इस वीडियो का पार्ट है, वो है टाइप्स ऑफ साइनेप्स. साइनेप्स के भी दो अलग अलग टाइप हैं. पहला है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, सेकंड है केमिकल साइनेप्स. ओके, तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स क्या है? इट इज़ इन दिस टाइप ऑफ साइनेप्स गैप बिटवीन द नेबरिंग न्यूरॉन इज़ वेरी नैरो. स्टूडेंट, साइनेप्स क्या है? साइनेप्स तो एक गैप है. तो हम लोग वो जो गैप है उसके बारे में बात कर रहे हैं. तो वो गैप जो है वो साइनेप्स जिसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो साइनेप्स के दो डिफरेंट टाइप्स हैं. जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है उसमें क्या होता है, जो गैप है बिटवीन द नेबरिंग न्यूरॉन इज़ वेरी नैरो. द synapse between such closed neuron is mechanical.
the electrical conductive link is formed between the pre and the post synaptic neurons. At the gap junction, the two cells are within almost 3.8 nm distance of each other. This is important part कि वो लोग कितने डिस्टेंस पे रहते हैं, 3.8 nm डिस्टेंस ऑफ ईच अदर. ट्रांसमिशन अक्रॉस द गैप इज़ फास्टर. ट्रांसमिशन फास्टर होता है अक्रॉस द गैप, but it also depend on the connection located at the gap junction between the two neuron. जो कनेक्शन है, जो दो न्यूरॉन के बीच में जो कनेक्शन है उस पे भी ये डिपेंड करता है. Electrical synapses are found in those places of the body requiring fastest response as in the defense reflexes. Also, they are bidirectional, allowing transmission in either direction or may be unidirectional. This is important part of this. जो इलेक्ट्रिकल साइनैप्स है जो इस प्लेसेस में मिलता है, इलेक्ट्रिकल साइनैप्स फाउंड इन दोज प्लेसेस ऑफ द बॉडी requiring fastest response as in the defense reflexes. Also, they are first what the property is that they are having a fastest response. उसके बाद they are bidirectional, allowing transmission, and it is allowing transmission in either side, or it may be unidirectional only in one side. ये है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या इलेक्ट्रिकल साइनैप्स. दिस साइनैप्स इज़ वेरी नैरो, साइज़ है 3.8 nm डिस्टेंस ऑफ ईच अदर. उसके बाद इसके अंदर स्पेशलिस्ट कैरेक्टर्स ये है, इट इज़ फास्टेस्ट रिस्पॉन्स, bidirectional, sometimes allowing transmission in either side, as well as it is unidirectional. Coming to the next type, it is chemical synapse. So as we have read about first electrical synapse, अभी हम लोग chemical synapse के बारे में देखते हैं. तो chemical synapse क्या है? These are the specialized junction through which cells of the neural system send chemical signal to the other neuron and to non-neural cells such as gland and muscles. Synaptic gap is larger than that in electrical synapse and it is 20 to 40 nanometer. ये एक स्पेशलाइज्ड जंक्शन है जहाँ पे से जो न्यूरल सिस्टम है हमारा वो केमिकल सिग्नल को भेजता है टू द न्यूरॉन एंड टू नॉन न्यूरल सेल. सच एज नॉन न्यूरल सेल कौन से? ग्लैंड है, मसल्स है. तो ये वाला जो स्पेशलाइज्ड जंक्शन है ये नॉन न्यूरल सेल के पास और न्यूरॉन के पास केमिकल सिग्नल को भेजता है. साइनेप्टिक गैप जो है इसका लार्जर होता है, बड़ा होता है देन द इलेक्ट्रिकल साइनैप. जैसे कि इलेक्ट्रिकल साइनैप में साइनेप्टिक गैप कितना था? 3.8 nm. While in this electrical synapse में 3.8 था, chemical में in this part in this type it is 20 to 40 nm. A chemical synapse between a motor neuron and the muscle cell is called a neuromuscular junction. This is important part. What is neuromuscular junction बोल के क्वेश्चन आता है. तो एक केमिकल साइनैप्स जो मोटर न्यूरॉन से मसल सेल के बीच में ट्रैवल कर रहा है उसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं. देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ अ टिपिकल केमिकल साइनैप्स. देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ टिपिकल केमिकल साइनैप्स. फर्स्ट है प्री साइनैप्टिक टर्मिनल,
that is mostly axonic terminal. Second है the synaptic membrane of the postsynaptic cell, that is usually on the dendrites of the next neuron या फिर neuron gland cell या फिर muscle. And the third is postsynaptic neuron. तो first था presynaptic terminal, second was synaptic membrane of the postsynaptic cell, and third is postsynaptic neuron. These are the components of typical chemical synapse. Then when we talk about chemical synapse, ये तीन चीज़ें उसमें हमेशा दिखेगी: presynaptic terminal, postsynaptic neuron, and synaptic membrane of the postsynaptic cell. So the impulse travel along the axon of the presynaptic neuron to the axon terminal. जो impulse आता है वो axon से होता हुआ प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन से लेके एक्सॉन टर्मिनल तक जाता है. मोस्ट प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन्स और एक्सॉन्स हैव सेवरल साइनेप्टिक नॉब at their ends or terminals. These knobs have arrays of membranous sac called synaptic vesicles, and that contain neurotransmitter molecule. When an impulse reaches a synaptic knob, voltage sensitive Ca++ channels open and calcium जो है हमारा वो diffuse होता है inward from the extracellular fluid. Once the impulse has been transferred across the synapse, the enzyme like cholinesterase destroy the neurotransmitter and the synapse is ready to receive a new impulse. Then जो increased calcium concentration होता है सेल के अंदर, it initiates a series of events that fuses the synaptic vesicles with the cell membrane of presynaptic neuron, where they release their neurotransmitters by exocytosis. Once the neurotransmitters bind to the receptor of the postsynaptic cell, the action is either excitatory, turning a process on, or inhibitory, turning a process off. This is dependent on the nature of the neurotransmitter involved. कौन सा ट्रांसमीटर इन्वॉल्व है उसके नेचर पे ये चीज़ें डिपेंड होती है कि एक्जिटेटरी है या इनहिबिटरी है. एक बार इम्पल्स ट्रांसफ़र हो गया तो उसके बाद एंजाइम जैसे कोलिनेस्ट्रेस डिस्ट्रॉयज द न्यूरोट्रांसमीटर and the synapse is ready to receive a new impulse. This is the types of synapses. पहला था इलेक्ट्रिकल साइनैप्स, सेकेंड है केमिकल साइनैप्स. एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस आर इम्पॉर्टेंट एंड दे आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट फॉर नीट पर्सपेक्टिव. उसके बाद कॉन्सेप्ट क्लियर होना ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को लेकर ही नीट में क्वेश्चंस आते हैं. देन यहाँ पे वी एंडेड आर साइनैप्स का पूरा प्रोसेस. वी विल एंड दिस वीडियो हियर ओनली. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू विद द ह्यूमन नर्वस सिस्टम. So thank you students and stay tuned and practice diagram as much as you can. This chapter is very important for NEET perspective. I am repeating this
because it is actually very important. The diagrams are really very important. So, thank you.